Combinations of moving average is probably one of the most intriguing, one of the most also frustrating part of any technical analyst, especially when he's new to the field, that which combination should I use, right? Even in 2004, 2005, when I was beginning and started my career in this particular field of technical analysis, I also played around, experimented, tried my late night hours into figuring out which combination is the best combination, just to realize that there is no best combination. I realized that fact. The best combination hota hi nahi. So what is a combination and how can we use these moving averages? Okay. Now we need to understand what is the use of moving average. It is important. There are a few aspects of what is the uses of moving averages and how we can see. A chart gives us the information about the price action, the demand supply play. But then from the demand supply play, from the chart, we want to learn, we want to anticipate, okay, Tata Steel consolidate kar raha hai. So which way can it open up? Will it fall further down or will it bounce back? We need to analyze the chart. We need to make sense of the chart. So for that perspective, there is a particular, very strong use of moving average. In a very simple sentence, I would say moving average helps me to give a nice structure to my chart. Probably you will not get much sense out of it, but I'll try my best. So moving average is a lagging indicator. Price moves first, moving average moves next. Price we saw makes a bottom. So in this particular chart, you will also see on the left-hand side, price makes a bottom, moving average makes a bottom. Later, price starts to go up, moving average starts to go up later. It's a lagging indicator. And ye lag rahega. If you reduce the time frame, then also ye lag rahega. And ye lag rehna chahiye. That's why I personally do not trade using zero lag moving averages. This lag is important because you should use a moving average for the purpose of trend identification as a confirmation tool, not an alert tool. अगर मेरा मूविंग एवरेज प्राइस के साथ उतने ही तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, देन मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूं, मैं प्राइस को ही देखता हूं. बट मूविंग एवरेज का जो ये लैग है कि ये वक्त देता है प्राइस को टू गेन फर्दर अप, देन वो रिवर्स होता है. ये जो लेट सिग्नल है, इसको आप लेट ना सोच के सोचिए कि मूविंग एवरेज आपको कंफर्मेशन दे रहा है. और कंफर्मेशन हमेशा इवेंट हो जाने के बाद ही आता है, राइट? पहले नहीं. पहले जो आता है वो अलर्ट है, उसके लिए लीडिंग इंडिकेटर्स है, वो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. वो पहले बताता है कि ये घूम सकता है, मोमेंटम इंडिकेटर्स टू बी प्रिसाइज. बट हम लोग मूविंग एवरेज का बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग एवरेज. सो द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये बाद में घूमेगा और ये मुझे कंफर्मेशन देगा. कंफर्मेशन ऑफ व्हाट? So the use of moving average for the sake of confirmation is primarily to identify, मैं बोलूंगा your trend rather than just the trend. Why did I put a your trend? देखिए, market goes up and down, price goes up and down, up, consolidation down, consolidation, etc., etc. Now, when a person says trend is up, trend is down, that is according to his subjectivity. उसको लगता है trend is up. A short-term trader जो सिर्फ 1 to 5 days का ट्रेड करता है, उसके लिए a short-term trend may be up, but the same stock for a long-term trend can be down. Idea का चार्ट देख लीजिए. Short-term it is showing some strength. Long-term चार्ट देखिए, it is down. So when a person says the trend is up, the trend is down, it is his perception, his trend. And everyone is not the same. An intraday trader ka nazariya is very, very different from a long-term investor or any kind of a fund manager. So the tools they will apply, the moving average they should look at should be distinctly different. So the idea is to identify the trend. Now the question is, I would like to ask all these things I did myself and asking myself over there, why do I want to identify? Why do I want to identify the trend? क्यों भाई, मुझे ट्रेंड क्यों जाना? मैं सिर्फ प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, मैं उसके हिसाब से बाय सेल करता रहूंगा, ट्रेंड जो भी हो मुझे कोई लेना देना. Is it important to identify the trend or is it important to identify my trend?
I think it is extremely important. I think it is extremely important because ये बहुत cliche line है, but it makes sense. The trend is your friend. When they say the trend is your friend, इसके पीछे एक meaning है. इसका meaning ये है that please trade in the line of the trend. It's far more easier to walk the path of least resistance. बाजार जिस तरफ जा रहा है, momentum जिस तरफ है, उस तरफ चलो, आपका profits generate करना relatively easier हो. Rather than contrarian. बाजार एक तरफ जा रहा है, आप उल्टा opposite trade करो. That is also possible. Contrarian trading. उसमें भी pros and cons है. उसमें भी profits होते हैं, losses भी होते हैं. But अगर we evaluate कि कौन सा type of trading करे, contrarian करे या जो चल रहा है उस तरफ करे, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको बेच के ट्रेड करे या जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है उसको खरीद के काम करे. If you compare the approach, then you will notice कि जो momentum plays है, जो अप ट्रेंड में है, उसको अगर लॉन्ग करने का कोशिश करे या जो स्टॉक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है उसको अगर शॉर्ट करके ट्रेड करने का कोशिश करे, keeping the trend in your favor, walking the path of least resistance is relatively easy. इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉफिट मिलेगा. लॉसेस प्रॉफिट्स इज पार्ट ऑफ द गेम, बट वो जो करना है, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग इज इजियर एंड इट इज ट्रू. इट इज 100%. इफ यू रीड serious work of people who are serious in this business, in this subject, and the kind of works that they have done, the trades they have done, आप notice करेंगे most of the senior guys in their work must have shared with us, keep it simple, number one, and try to trade in line of the trend. Try to trade it because it's far more easier to get it done. So understanding the trend is very important, and ये intraday trader के लिए भी important है, and positional trader के लिए भी important. So now that I'm going to use moving average, हम moving average को इस्तेमाल करेंगे trend के लिए, and आपने notice किया होगा, I had mentioned here your trend, मतलब मेरा trend. What is my trend? This my trend is 100% a function. This your trend is 100% a function of what kind of a trader am I? किस किस्म का ट्रेडर. इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यूज करेंगे, 5 दिन मैक्सिमम 10 दिन, 5 पीरियड, 10 पीरियड. You are slightly more than that, 5 to 10 period positional holding, you use a little longer. You're a long-term investor, use 100-day, 200-day. So the choice of the moving average, the selection of the parameter, of the calculation of the moving average depends on आपको चाहिए क्या. I'll share some combination. उसके पहले मैं 2-3 moving average plot करके आपको दिखाता हूँ. See, the green line is a 20 period exponential moving average, which we have plotted on the chart. It's a 20 period. ठीक है? Please take a look at it and understand how the 20 period is reacting with the black line. The green line, which is the average, is calculated from the black line. What is the black line? Actual closing prices. How is the black line behaving? Very volatile, falls, jumps up, sharp falls, and it's highly, volatile, ebb and flow. What does the green line do? The green line is also falling. The green line is not going up. The green line is also falling, but it's got a gracefully given. It is smooth. It has smoothened out the data. It is kind of calculated the average, and calculating average is smoothing out the information. इसीलिए the moving average को जब आप देखेंगे प्राइस के साथ जब तुलना या कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे वो बहुत स्मूथ बिहेवियर है. बाद में गिरता है बट स्मूथली गिरता है, उसमें उतना वॉलेटिलिटी नहीं है. दैट इज द जॉब ऑफ एवरेज. That is the job of average. So what kind of combination should we use? Let's say I'm a short-term trader and my trades are intraday to 2-3 days. उससे ज़्यादा नहीं. So I am more interested कि what are the short-term gyrations of the market. So 20-day probably will be too much for me. I would like to reduce it. तो मैं इसको reduce करता हूँ. आप notice कीजिए क्या होता है. 20 को मैं 10 कर रहा हूँ. Just notice how the green line shifts. You see, the green line has shifted more towards the black line. It has gone close to the closing price. अब मैं इसको 10 को अगर reduce करता हूँ 9,
8, 7, 6, 5. You notice the 5 period average? मैं एक काम करता हूँ. Let me do one thing. मैं 5 period के साथ 20 period को भी डाल दूँ. It will be good for you to visually understand यहाँ पे हो क्या रहा है. Now see the green line and the red line, and bring your focus from this point to this point. ठीक है? इस zone पे हम discuss करेंगे. Within this zone. So what happened in this zone? Prices fell. The black line, the dotted black line fell. Right? And the red line also is falling, which is 20 period. Now you look at the green line. If you focus the green line, you will notice the green line, ये जो bounce back था, ये जो छोटा मोटा bounce back, ये जो छोटा मोटा bounce back, और ये जो छोटा मोटा bounce back था, short term bounce back in a long term downtrend. इसके साथ आप notice करेंगे, the green line also bounced up. The green line also reversed the slope up, because the short term average, it's reacting to short term changes. अब आपको समझना है, क्या मुझे ये information चाहिए? क्या मैं 5 period average क्या मेरे ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप यूज मत कीजिए, आप 10, 15, 20, 25, 30 यूज कीजिए. अगर इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ऐसे ट्रेडर हो शॉर्ट टर्म इन नेचर, एंड आपको ये बाउंस बैक में भी लॉन्ग ट्रेड करना है, इस फॉल में भी शॉर्ट टर्म ट्रेड आप अटेम्प्ट करेंगे, देन यू नीड द मूविंग एवरेज टू बी शॉर्ट टर्म. अगर आप ऐसे ट्रेडर हो कि मुझे ये शॉर्ट टर्म बाउंस बैक से कोई लेना देना नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म बाउंस बैक, आई एम इंटरेस्टेड इन द बिगर फॉल्स, फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो लाइक दिस यू कैन यूज मल्टीपल मूविंग एवरेज, यू कैन यूज multiple moving average, you can choose multiple combination, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, there are n number of combinations. मैं आपको एक combination share करता हूँ which I've been using and sharing in my training programs for I think many years now, which is taken from the taken from the Fibonacci number series 13, 21, 34. मैं आपको दिखाऊंगा. Let me remove these indicators. We'll come to indicator section. We will scroll down to moving average ribbon. ये जो रिबन इंडिकेटर है ना, ये अपने को 3-4 इंडिकेटर्स एक साथ प्लॉट करने का मौका देता है. इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू प्लॉट सम 3-4 indicators at the same time. Let's come to inputs. So if you take a look at this section, if you take a look at this moving average ribbon, it gives you the opportunity to plot 4 different moving averages. तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? What we will do, we will change this to exponential moving average. तीनों को exponential कर देंगे. हाँ, तीनों को. Fourth one we don't want. So fourth one को मैं अनचेक कर देता हूँ. ये सब क्लोजिंग प्राइस पे ही रहेंगे. और the पहला one, the first one 13, 21, 34. I've taken this number from Fibonacci number series. इसका एक लॉजिक भी है. And for better understanding, I always color them RGB. R is red, G green, B is blue. RGB. आप स्टाइल पे आइए, यहाँ पे आपको ये प्लॉटेड हुआ दिखेगा. एंड फॉर बेटर क्लैरिटी इसको थोड़ा डीपन डार्कर कर देते हैं. आर डार्कर, ग्रीन डार्कर एंड ब्लू डार्कर. इसको ओके कर देते हैं. नाउ यू सी वी हैव 3 exponential moving average. You can read works of Daryl Guppy, rainbow moving average, something like that, जहां वो 5, 10, 15, 20, 25, 30 different 4, 5, 6 moving averages को प्लॉट करते. To find that area, वो spot चाहिए जहां पे prices are trending. So in this particular chart of Tata Steel, if you notice, ये जो 3 exponential moving averages है, जब ये तीनों के तीनों, you know, when let's say 13 exponential moving average, 21 exponential moving average के नीचे है, और 21 exponential moving average 34 exponential moving average के नीचे है, which is essentially, if you notice, from this point, from RGB, यहां से यहां तक, this entire area, it was in a nice downtrend. आप इसको 34 के साथ 55 भी ऐड कर सकते हो. जितना आप ऐड करोगे उतना आपका जोन कम होते जाएगा, जितना घटाओगे वो ज्यादा होते जाएगा. एक मूविंग एवरेज, डू नॉट यूज वन मूविंग एवरेज टू डिसाइड द ट्रेंड. नॉट अ गुड वे, बिकॉज ट्रेंड टू मूव फ्रॉम डाउन टू अप और अप टू डाउन, उस ट्रेंड को वक्त देना चाहिए. इट शुड गो थ्रू अ ट्रांजिट पीरियड, बिकॉज डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई इज चेंजिंग टू सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड.
all of a sudden everyone is bullish, एक दिन में सब लोग bearish नहीं होते. To reverse the trend, एक leg downfall होता है, उसके बाद reverse. So never use one moving average for the identification of trend. It is useful, it is simple, but it's not logical, doesn't make sense. Two moving average, dual combination is better than one, but in that case also dual भी हमेशा uptrend downtrend में रहेगा. डुअल मूविंग एवरेज कभी भी आपको वो जोन नहीं बताएगा कि ना ही ये अप ट्रेंड में है नॉर ये डाउन ट्रेंड में. द मोमेंट यू स्टार्ट टू यूज 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर, दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन विल गिव यू अ जोन, विल गिव यू एन एरिया जहां पे आप वेल डिफाइंड नहीं हो. यू आर नाइदर एन अप ट्रेंड, यू आर नाइदर नॉट अ डाउन ट्रेंड. स्पेशली रेंज बाउंड मार्केट में आपको ये क्लियरली बता देगा कि मैं नाइदर अप ट्रेंड में हूं नॉर में डाउन ट्रेंड में. Or I think this is a completely personal opinion based on my understanding and logic, that we should always give these moving average, we should always give the market a little bit of room to breathe. That if you want to move from an uptrend to downtrend, एक ऐसा transit period zone होना चाहिए जहां पे हम उसको हाथ नहीं देंगे, because ये probably एक trend reversal कर रहा है, probably एक नया trend पकड़ रहा है, maybe up or down. So वो breathing space देना चाहिए, and I think it makes sense, and that's why I personally use this. I teach this also. आप इसको घटा बढ़ा सकते हो. You can increase it. You can use simple numbers. You can use, let's say, 5. If you use 10, then आपको ideally 20 use करना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि 5 to 10, 1 to 2 जब आप next moving average पे जा रहे हो, what is your multiplier? 5 into 2. So similarly, जब 20 to next पे जाएंगे ना, वो मल्टीप्लायर को सेम रखिए. 5, 10, 40 मत कर दीजिए, 5, 10, 35 मत कर दीजिए. तो तीनों के बीच का जो बिहेवियर है, तीनों के बीच का जो जोन है, जो स्कोप है, वो एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए. और उस कंसिस्टेंसी के लिए you use any combination. If you're a short-term trader, you can use 5, 10, 20. You can use Fibonacci number 5, 8, 13. Anything. Slightly longer time period चाहिए, आपको larger trends में interest है, use larger numbers 21, 34, 55. You can use 20. You can use 25, 50, 100. अगर 200-day moving average is an important for you, so you can use 200, 100, 50. Right? So choose your combinations accordingly. For short-term trading, which lasts for, let's say, 3 days to like 3 weeks, I find this particular combination जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया 13, 21, 34 is fairly useful. In my experience, in my past, I have tried a lot to find the best combination. Trust me, there is no such best combination. You have to find a combination which is sensible and logical and try to make the best out of it rather than to find the best combination.